कंपटीशन का जमाना है भाई. Why so serious? Competition में we pick the best to compete with. Now, as you've all seen over the last few days, Sindhu was competing with world number 1 Carolina Marin. Sakshi Malik was against the best and the most trained wrestlers in the world, including the Russians. And Deepa Karmarkar, our darling, was up against Simone Biles, who, by the way, many are saying, is the most phenomenal gymnast the world has ever seen. That is the level of competition we are talking about. And in Bharat, well, in Bharat की लड़कियों से इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे देशभक्त nationalists are competing with. No, that's not them. Freedom of expression not happening. Swachh Singapore for many decades, huh? Swachh India, no. कहाँ यार, मेक इन इंडिया कहाँ हो रहा है? मेक इन चाइना ही है अभी तक. Are you serious? Sports, फुटबॉल, हैं? अरे यार, अगर हैप्पीनेस ही होता ना, तो इस शो का नाम वाई सो हैप्पी होता, नॉट वाई सो सीरियस. अरे छोड़ो यार, मैं ही बताता हूं. हमारे पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट्स आर कंपीटिंग विद Pakistan. क्योंकि you see, there is nothing that says that you're so bigoted, silly, and a failed state better than actually competing with your object of contempt. सारा टाइम हम क्या बोलते रहते हैं? पाकिस्तान है. And then we are becoming like them exactly. Now, imitation may be the best form of flattery for you seculars and libtards, but for proud nationalists, imitation is the best form of hatred. Now, why I say this, you ask? Oh, you innocent YouTube video viewer, first like or subscribe. Like, subscribe. I'm waiting. Ha. Now, why do I say that proud nationalists are imitating those that they claim to hate the most? क्योंकि पिछले कुछ दिनों पाकिस्तान में क्या हुआ? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलूचिस्तान दाव से पाकिस्तान बौखला गया है. पाकिस्तान ने उन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तारीफ की. तो ये मौसम रहा ऐसा सेडिशन का पाकिस्तान में. इंडिया में करंट माहौल में 3 चीजें प्रसाद की तरफ बढ़ रही हैं. नंबर 1 प्रसाद, दूसरा है गौरक्षा आईडी कार्ड्स, और तीसरी चीज सेडिशन केसेस. टाइम डजन है जी. लेटेस्ट ऑफ कोर्स एक्ट्रेस राम्या, जिसके खिलाफ लगा सेडिशन का ठप्पा बिकॉज शी सेड पाकिस्तान is not hell. Last week, Defense Minister Manohar Parrikar equated Pakistan to hell in a public gathering. Today, a sedition case was filed against actor Ramya, who contradicted him and said just the opposite. I was in Mandya for a program and the media asked me what my experience was at the SAARC conference, and I said that, I disagree with Manohar Parrikar's comment that Pakistan is hell. It's not hell, and Pakistanis are just like us, and we were treated very well, and that is a fact. उससे कुछ दिन पहले the amnesty issue. कश्मीर की आजादी को लेकर लगाए गए नारे को लेकर बेंगलुरु पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है. शनिवार की रात एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो कार्यक्रम आयोजित करवाया था, उसमें भारत विरोधी नारे लगे थे. और उससे पहले अपने आर्मपिट को आजमाने वाले आजादी लवर, हम लेकर रहेंगे दुर्गंध से आजादी. गुजरात से आजादी, अरे गुजरात से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, चाउमीन खाने की आजादी, तो हाँ कहने की आजादी. The JNU Students Union president has now been arrested. Police say that the student Kanhaiya Kumar was seen in a video of people who were raising anti-national slogans. मतलब सेडिशन ना हुआ, मॉनसून का वायरल फीवर हो गया. And if it wasn't bad enough, any critical opinion about India these days is sedition, and any complimentary opinion about people of a country whose government is against India is also sedition now. And this is not a surprise actually, because this is what the party president of the Lotus Bloomers has to say on record. फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ एकजुट होना होगा. देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बगैर कोई राष्ट्र एक नहीं रह सकता. तो भाई और बहनों और मित्रों, आपसे ध्यान रहे कि देश के दुश्मनों को हेलो नहीं बोलने का, थोड़ा स्माइल भी नहीं करने का, कुछ होता है भी एकदम नहीं बोलने का, नहीं तो लगेगा सेडिशन का ठप्पा. मम्मी मुझे डिलीशियस चाइनीज फूड खाना है.
You fool! China is eating our border and you want to eat Chinese food? Here, have some vada pav. Ayla, my favorite cricketing grounds is Lords. अंग्रेज का गुलाम क्रिकेटिंग से भी लॉर्ड्स का नाम याद आता है. 3 गुना लगान लगाओ उस पर. सेडिशन का चाटा भी. Bro, check out my new iPhone, man. साला मेड इन चाइना प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करता है. लगा उस पर सेडिशन. मम्मी, हुहा, मैं जूडो और कराटे में फर्स्ट आया. सेडिशियस नालायक, ये जापानीज और चाइनीज मार्शल आर्ट्स में फर्स्ट क्यों आया? योगा में फर्स्ट क्यों नहीं आया? से ओम. देखिए मोदी जी, अगर आपकी सरकार का विरोध या भाजपा का इंसल्ट एंटी नेशनल होता है, तो फिर ये क्या है? अबे, I am all for freedom of dressing, but if you really have to take issue with something at being insulted, then this qualifies more than anything else. Jesus Christ की कसम. ये मैंने स्पेशल ड्रेस बनवाई है. सम बीजेपी पीपल एंड मोदी जी के जो खास अमित शाह जी के असिस्टेंट्स हैं, उनको पहले से ये ड्रेस भेजी थी अप्रूवल के लिए कि यस आई एम गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस. आई नीड अप्रूवल. मुझे अप्रूवल आने के बाद ही मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना है. I'm just thinking Modi ji, Amit Shah ji giving approval to Rakhi in that dress. Anyways, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं. But seriously guys, it's actually thanks to the Supreme Court that we really haven't become another Pakistan, because many governments over the past decades, Congress, BJP, have slapped these seditious cases. But here is what the Supreme Court had to say. In the very famous Kedarnath versus State of Bihar case, the court has ruled, and I quote, vigorous words in writing and very strong criticism of measures of government or acts of public officials would be outside the scope of Section 124A, that's of course sedition. The Supreme Court also observed, a citizen has a right to say or write whatever he likes about the government or its measures by way of criticism or comment, so long as he does not incite people to violence against the government established by law with the intent of creating public disorder, unquote. Now, digest this. Even for protesters demanding independent Khalistan, the Supreme Court at that point of time had said sloganeering and protest in this manner was not sedition. तो भाइयों and मित्रों, stay safe. और अगर आप पर भी sedition केस लगाया गया है, तो thankfully the Supreme Court at least is there to keep you safe. And behno, you can now go and pray to the gods, because thanks to the same Supreme Court, ladies can enter the Haji Ali, the Shani Shignapur and the Trimbakeshwara temples. At least someone's keeping the sanity and helping us not go the same one-way street that Pakistan had taken so many years ago. Now, if you've hated this video and want to send me to Pakistan, please subscribe and comment in the section below. Liptards have a visa on arrival in Pakistan. Thank you for watching. If you like that, click here to support us and down here to subscribe to our YouTube channel, and do check out the other stuff we do like News Laundry interviews, Why So Serious, animations, comics, panel discussions, podcasts which are really big, and much more.